Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin. With me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. In yet another late update, Directorate of Health Services added another 68 additional deaths that occurred from August 2020 to June 2021 to its daily COVID mortality bulletin. Today, we spoke to senior doctors in Goa about the deaths being reported late and also the compensation given to the COVID-affected family. This is a very common. It is called a reconciliation करतो आम्ही. In health, this is a very normal way of doing it. And big state ते पहिल्याला 6,000-7,000 ॲड जातात मधीच. आमकां त्याने कमी आहा म्हणून ते 60-70 बी अशें वतात. पण हे कशें आता एक्झॅक्ट तुका पयलीं आयले ना गायडलायन्स सारक्यो नाशिल्ल्यो सुरवातीच्यो गायडलायन. आतां पळय आतां गायडलायन्स आयल्या कश्यो की तुका आयज आमी कितें करताले पयलींच्या हातून आयज तुका जालो कोवीड, तूं म्हजे कडेन आसलो एडमीट जालो, 14 दिसांनी तूं नेगेटीव जालो आणि मागीर तूं मेलो जाल्यार आमी ते कोवीड म्हणनाशिल्ले. सो दॅट डेट वॉज नॉट कमिंग एज अ कोवीड. आतां तुवें नवीन जे गायडलायन्स केल्या की तूं आयज आसा एडमीट आसा, विदीन 30 डेज जर तुजे डेट जाले म्हणजे एकदां तूं पॉझिटिव्ह जालो, विदीन 30 डेज तूं कित्यानूय जर मेलो अदर दॅन द ट्रॉमा म्हणजे मार लागून मेलो, अदर दॅन रेग्युलर तुका तूं हॉस्पिटलान आयलो परत तुका खरज मारली आनी तूं मला आफ्टर एक सपोज 28 दिसांनी मेलो, घरा मेलो जाल्यार सुद्दां यू वील बी कन्सिडर्ड एज अ कोवीड डेथ. तूं नेगेटीव आसा म्हणजे तूं आतां पळय एक्झाम्पल परत आयका, आयज तूं पॉझिटिव्ह जालो, हॉस्पिटलान एडमीट जालो, 14 दिसांनी तूं नेगेटीव जालो, घरा गेलो, 28 दिसांनी तूं मातसो जोर आयलो आनी गेलो, इट वील बी कन्सिडर्ड एज कोवीड डेथ. पयलीं ते आमी नॉन कोविडान घालताले कित्याक तूं नेगेटीव जालो म्हणून. आनी तूं हॉस्पिटलान 3 म्हयने उरलो, नेगेटीव आसा तूं पूण कोवीड आशिल्लें तुका आनी 3 म्हयने उरलो, स्टील यू वील बी कन्सिडर्ड एज कोवीड डेथ. आनी तूं हॉस्पिटलान 3 म्हयने उरलो, नेगेटीव आसा तूं पूण कोवीड आशिल्लें तुका आनी 3 म्हयने उरलो, स्टील यू वील बी कन्सिडर्ड एज कोवीड डेथ. सो ती डेथ रेट आतां वाडटली बिकॉज नाव देर इज अ सिस्टीम आयली जाग्यार. आनी ही तुजी ती 68 जे ते म्हणटात ती आर नॉट डायड इन द हॉस्पिटल. हे रस्त्यार मेल्ले कोण भिकारी आशिल्ले किंवा अननोन आशिल्ले, घरा कडेन आयिल्ले मागीर ते गेले तांचे थंय काडिल्ले स्वॉब. देर वॉज नो प्रॉपर रिपोर्टींग सिस्टीम तेन्ना नाशिल्ली. सो त्या वेळार ते रिपोर्ट जावंक नाशिल्ले. आतां ते तूं रिपोर्टींग करून वता. आतां कित्याक सी नाव मोर अँड मोर डेथ्स वील कम आउट. पयलीं लोकांक आपल्या डेथ सर्टिफिकेटाचेर कोवीड नाका आशिल्लें म्हणजे पांयां पडटाले की कोवीड शब्द घालूं नाका म्हणून, कित्याक तेन्ना पयशे मेळनाशिल्ले. आतां पयशे मेळटा, तूं म्हणटा कोवीड घाल आपलें. मागीर आमी सांगता तुजें तें हे हाड रिपोर्ट जाय तुजो, हल्ले तुजो रिपोर्ट आयले सो यू आर कोवीड डेथ म्हणूंक शकना. आनी आतां गायडलायन सारक्यो आयिल्ल्यो आसा. सो त्यो गायडलायन पळोवन ते तुका सर्टिफिकेट बरोवचें पडटा. सो तो नंबर वाडटलो तुजो आतां. Several port towners and social activists have raised their eyebrows over the Union Minister of the State for Tourism, Ports, Shipping and Waterways, Shripaz Naik's confidence that Murmugaon Port Trust could earn profit if the cargo quality is increased and the quantity. Minister had assured to provide all necessary help to strengthen the financial condition of the port. Now Goans have questioned, what will the cargo contain? Packed coal? They said we don't want any more coal in Goa. वीच कार्गो स्पेसिफाय कर न्हू. सद्याच्या परिस्थितीन जो कार्गो येता न्हू इट इज अ कोल कार्गो आनी तो तूं वाडोवंक सोदता. आयज आमचे गोंयकार कितले गोंयकार ह्या कार्गोच्या पोल्युशनान मेले. थोडे सीख आहा, कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक अदर लंग रिलेटेड डिजीज जाले. सो तूं स्पेसिफाय कर खंयचो कार्गो तो. आमच्या लोकांक मारून उडोवपाचें हे षडयंत्र जे चल्लां खबर आहा तुका, हें बंद करा. अरे आयज जेन्ना गोंय पेटलेलें आहा, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साक सगळे कडेन ओपोज जाता, मोले डिफॉरेस्ट्रेशनाक ओपोज जाता, कितें तेच्या भायर डबल ट्रॅकिंगा खातीर ओपोज जाता, लँड इक्विजिशन करूंक सोदता लोकांचे. आख्खे सगळ्याचो सत्यानाश करपाक उठल्या तुमी सारके ह्या कार्गो हँडलिंगाच्या नाटकान. की कोल कार्गो जो आहा ते हँडलिंगाच्या नाटकान आमी ओपोज करता. आमकां श्रीपद नायका कडल्यान ही अपेक्षा नासलेली. आमी अशें चिंतताले कितें सांग, यू आर अ 6 टायम MP आय थिंक 6 टायम ऑर 5 टायम. कितें रे तुका मात तरी एटलिस्ट एक गोंयकारांच्या हितान चिंतपाचें. आमी तूं तरी एक सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून तूं ह्या कोलाच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून आमी चिंतताले. पूण तूं सुद्दां आयज कार्गो हँडलिंगाचें इन्क्रीज करपाचें म्हणून उलयता. स्पेसिफाय कर न्हू कसलो कार्गो तो. पळय सर हांव तुका एक सांगूंक सोदता, एज आय एम अ मोर्मुगांव रेजिडेंट. हांगासर जे पद्दतीन पयलीं MPT चलताली न्हू, आयज कोल हँडलिंग करून सुद्दां MPTचो सत्यानाश जाला, काबार जाला, रिक्रुटमेंट बंद जाला. तुमी जे गोवा गव्हर्मेंटाचे रिक्रुटमेंटाचे उलयतात न्हू, आयज MPT रिक्रूट करिना हांगा.
आयज आमचे शिकलेले सवरलेले भुरगे बेकार आहा. MPT पयलीं हेच्या पयलीं जी रिक्रुटमेंटां करताली न्हू, ती रिक्रुटमेंटां आयज टोटली बंद जाला. आयज कोल हँडलिंग करून सुद्दां तांकां प्रॉफीट जायना जितले जावंक जाय आसले तितले. दॅट मिन्स हेच्या पयलीं जो ग्रीन कार्गो हँडल करताले, गंव येताले, तांदूळ येताले, साखर येताली, कंटेनर्स येताले, मेडिसीन वयताले, सगळे जे प्रोडक्ट्स आसलेले ते तुमी बंद केले. कित्याक बंद केले? अदानीक आनी जिंदालाक सपोर्ट करपाक. हो हेजार्डस प्रॉडक्ट हांगासर तुमी प्रमोट करपाक हें सगळें बंद केलें. हो बिझनस आसतना हांगासर कितले कॉर्पोरेट्स आहा जे हांगा बिझनस करपाक सोदता, पूण तुमी तांकां एंट्री दिना भितून. आनी कार्गो वाडोवपाचे खंयचे उलयता? ऑलरेडी कंटेनर सर्वीस तुमी बंद केल्या थंयसर, आनी तुमी कार्गो वाडोवपाचे खंयचे उलयता? म्हाज्या हिसपान जाल्यार युनियन मिनिस्टरान क्लियर करपाची गरज आहा. वीच कार्गो? इज इट अ कोल कार्गो? कोल कार्गो तो कोल कार्गो जाल्यार आमी हेचो निशेध करता. आमकां कोल कार्गो मुर्मुगांवान नाका. आमी हेच्या पयलीं सुद्दां निशेध केला. मुरगांव पोर्टाची जर क्वॉन्टिटी वाडयत जाल्यार पोर्ट प्रॉफिटान येवं शकता. सो आमकां हेच्यावर मातसो दुबाव आसा. क्वॉन्टिटी वाडप म्हटल्यार कसली क्वॉन्टिटी वाडप? कोलाची क्वॉन्टिटी वाडप, कंटेनर फ्रेटाची क्वॉन्टिटी वाडप, की ग्रीन कार्गोची वाडप, कितें नॉन ग्रीन कार्गोची वाडप? म्हाका दिसता तेंच्यांनी हेच्यावर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. आमी तांकां सांगूंक सोदतात, जर तांकां खबर ना जाल्यार, की पोर्ट जेन्ना ऑपरेशन जेन्ना पोर्टान केल्लें फ्रॉम द बिगिनींग, तेन्ना ते फक्त ग्रीन कार्गो हँडल करताले. जेन्ना MPTन जेन्ना आयर्न ओर, मॅग्नीज हे जेन्ना एक्सपोर्ट जावपाक लागले, तेन्ना हे पोर्टाचे खंय तरी लोकांचे, जे मुरगांवचे आनी वास्कोच्या लोकांचे अस्तित्व हे पोर्टाचेर आहा, की खुबशे लोक हे पोर्टाचेर डिपेंड आहात. आयज क्वॉन्टिटी वाडोवपाचें उलयतना आमकां अशें दिसता की ते खंय तरी कोलाचे एडवोकेट जाल्ले आहात, आनी तांकांय खंय तरी दिसता की कोल वाडलो जाल्यार हांगा पोर्टाचे कॅपेसिटी वाडटले. सो आमी तांकां सांगूंक सोदतात, जर तांकां खबर ना अशें दिसता की जो अदानी आनी जिंदाल जो पोर्ट हँडल करतात, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रायवेटायझेशन. हांगासर दर म्हयन्याक ते MPTक जो रेवेन्यू दिता तितलोच, आनी जे पायलटींग चार्जीस आहा तितलेच. हेच्या वयर येनावळ म्हणटा ती कांय ना. आनी गेल्या म्हयन्यान जेन्ना आमी गोवा फस्टान अपोज केल्लो, वी हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू द मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग की जो कंटेनर फ्रेट मुरगांव पोर्टाच्यान बंद करपाचो ना, पूण तेंच्यांनी बाळी ह्या गांवान कॉन्कोराचो यार्ड ओपन केला, आनी हांगाच्यान ते JNPTक एक्सपोर्ट करतात जे कंटेनर आहात ते. Now, the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, on Saturday said that some of the tourism activities have already resumed in the state, not fully. But after all Goans are fully vaccinated with both the doses of COVID-19 vaccine and vaccination, then only the entire tourism activities will be fully operational. Take a look. MOS मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी भी उपस्थित थी. मैं सबसे पहले माननीय पंतप्रधान जी का धन्यवाद देता हूं सभी गोवा के लोगों की तरफ से. उन्होंने आज डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स और जो बेनिफिशियरीज थे, जो सीनियर सिटीज़न हमारे मुस्लिम भाई और हमारी बहन, उनके साथ में उनका बातचीत हुई. उन्होंने ना कि वैक्सीनेशन, बाकी सभी के बारे में भी उन्होंने बात की. इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. उनके आज के स्पीच में खास करके गोवा का 100% वैक्सीनेशन विल गिव बूस्ट फॉर द टूरिज़्म ऑल्सो, ये बात खास करके उन्होंने उल्लेख किया. इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. और आगे हमने जैसे बता दिया है कि 31 अक्टूबर तक हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी 100% पूरा करेंगे. इसलिए मैं उनके मोटिवेशन से सभी लोग मोटिवेट होके और निश्चित रूप से सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन 100% हम पूरा करेंगे. बस यही आज बहुत और मोटिवेटिव स्पीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. सर, टूरिज़्म का ऊपर कुछ डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज़्म 100% वैक्सीनेशन के बाद हमें बढ़ावा देना चाहिए. इकोनॉमिकल एक्टिविटी रिवाइव होने के लिए टूरिज़्म विल गिव बूस्ट फॉर द स्टेट. आने वाले दिनों में फुल फ्लेज टूरिज़्म गोवा में स्टार्ट होने के लिए हम डबल डोज वैक्सीनेशन और विद नेगेटिव सर्टिफिकेट अच्छी तरह से टूरिज़्म स्टार्ट हो सकता है. सर, आगवाद फोर्ट ओपनिंग के लिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल. उन्होंने आज आगवाद फोर्ट हो, जुआरी सेकेंड ब्रिज हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उल्लेख किया. डेफिनेटली आगवाद फोर्ट के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगे. जल्दी ही वो डेट बताने वाले हैं. Prime Minister Narendra Modi on Saturday congratulated Goans. PM said that everyone is eligible person in Goa has received the first dose of vaccine. This is a big deal in the fight against coronavirus. कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां अनेक साथियों ने जो अनुभव हमसे साझा किया, उनसे साफ है कि अभियान कितना मुश्किल था। उफनती नदियों को पार करके वैक्सीन को सुरक्षित रखते हुए दूर दूर तक पहुंचने के लिए कर्तव्य भावना भी चाहिए, समाज के प्रति भक्ति भी चाहिए और अप्रतिम साहस की भी जरूरत लगती है। आप सभी बिना रुके, बिना थके मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपकी ये सेवा हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सारी बातें कितने उत्तम परिणाम लाती हैं, ये गोवा ने, गोवा की सरकार ने, गोवा के नागरिकों ने, गोवा के कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये कर दिखाया है। सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार का समन्वय गोवा ने दिखाया है, वो वाकई सराहनीय है। प्रमोद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। राज्य के दूर सुदूर में बसे केना कोना सब डिवीजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टीकाकरण होना, ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे खुशी है कि गोवा ने अपनी रफ्तार को ढीला नहीं पड़ने दिया है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी डोज के लिए राज्य में टीका उत्सव चल रहा है। ऐसे ईमानदार, एकनिष्ठ प्रयासों से ही संपूर्ण टीकाकरण के मामले में भी गोवा देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और ये भी अच्छी बात है कि गोवा न सिर्फ अपनी आबादी को बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों, बाहर से आए श्रमिकों को भी वैक्सीन लगा रहा है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। सगळांक देव बरे करो। Now the Mapsa police in a narcotic raid have arrested one for illegal possession of 1.10 kgs of ganja worth 1.10 lakh rupees. The accused has been arrested under 11(2)(b) 1B of NDPS Act. Now, based on prior intelligence, the staff of Mapsa police station led by PSI Ashish Parab, along with 2 panchas, conducted narcotic raids and caught red-handed accused person Vishal Ramesh Bordekar, aged 29-year-old, resident of Moira Mapsa Bardes Goa, for illegally possession of 1.100 kgs of greenish color grass substance suspected to be ganja worth 1,10,000 rupees. Now the Kortalim Panchayat witnessed heated moments after a special
body meeting was called by the Panchayat to discuss the auction procedures to be adopted for the auction of a shop in the new Kortalim market complex. Sarpanch Senior Pereira said that the Panchayat body meeting was taken up to explain all bylaws given by the government over allocation of shops in the new market complex. I don't want to hide म्हाका लोकां बरी कितें लिपोवपाक गरज ना आनी एज दे सेड ग्राम सभा ऑफ कोर्स वी आर रेडी बिकॉज 10 जाणांगे प्रोजेक्ट तो कोणागे एकल्यागे प्रोजेक्ट न्हू आनी सेकंडली अबाउट द नोटिफिकेशन आई डोंट नो ऑन वॉट ऑथेंटिसिटी दे आर सेइंग दैट द नोटीस जालो डेट केल्यो देर इज समथींग कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग इज नॉट द फायनल दीस सो हांव नको आतां डेट ऑन वॉट बेजीस सांगलें सेक्रेटरी आहा हावचे लास्ट 2 मिटिंगी पयलीं रेजोल्युशन घेतलेलें जेन्ना रेजोल्युशन घेतलें कोणाकूय दिसता रेजोल्युशन हिडन केलें म्हणून when they're confirming the meeting you can always question it. There should be discussion. Meeting confirm कोना सो ना आमी मुखार proceed कोन्हे confirmation टायमार देखून तुमच्यान चोवपाक जाता if there is any discussion. Already a provision for local farmers. एक न्हू थिंगा फ्रीलान्सर म्हूण हे आहा 2 भाशे फ्रीलान्सर्स आहाय वन इज वेजिटेबल फ्रीलान्सर्स द अदर वन इज फिश फ्रीलान्सर्स सो हांव मागतलें आसलें लोकांनी आपणागेली जी पिकापोट जाता घरांत ती तांणी येवन एक दिसाची बसून आपणागेली पिकापोट विकपाची ते बाजरां सो दीज आर द प्रोविजन्स ते बाजरां आहाय ते सेकंडली आमचे जायते जाण कुट्टाळे लोकल फिशींग चालू आहा लायक कुटांनी बीन हे सगळें तांकांय बीन प्रोविजन आहा एक दिसा तेमी येवपाचें आपणागेले जे हुटांनीचें नुस्तें कितें दवरलां तें बसून विकून सो हे भाशेन न्हू द मार्केट इज डिजायन इन सच अ वे आमचो बाजार ओपन केलेलो जबरदस्ती केलेलो कोर्टां आसतना कोर्टां आमलेली केलेलो आनी कोर्टां आमकां केस फायल केलेली सानात जावं ना सानात जायना आसतना तुज्यान हें घेवपाक जायना ऑक्युपन्सी इश्यू करपाक जायना तेजे आमी कोर्टां गेलोले जाल्यार हो तर बाजार भितर गेलो तेजी रेवेन्यू कितू येयला आयज पासून आनी एक्सपेंडिचर कितू जाला आमकां तें जाय लायटी बिलां पयशे कितू जाले सिक्युरिटी आहा थिंगा सिक्युरिटी कितू जाल्या तो गेट आहा थिंगा सिक्युरिटी आहा थिंगा तरी पूण तें कोणागे पब्लीक पार्किंग जाला वचून गाडी दवरपाच्यो बेबदी वचून थिंग पिताय आनी न्हिदताय बाटली गेल्या कितल्यो मेळटाय थिंगा बेबदी पासून पडलो आसताय आनी एक पाट आमी गेले तेन्ना हें सगळें फोडलो आहलोलें एकल्याचें आनी रोगत पासून लागलो आहलो सकल सो तेसो जावपाक जायना हो 10 जाणांगे प्रोजेक्ट हो कोणा एकल्यागे प्रोजेक्ट न्हू एकल्यान डिसिजन घेवपाक 10 जाणांगे प्रोजेक्ट आमची पंचायती प्रॉपर्टी ती सांबाळून दवरल्या लोकांन ग्रामसभा मागता वय ग्रामसभा लोकांचें एक डिसिजन आहा रेजोल्युशन आहा घेयलोलें की हे प्रोजेक्टा वयर ग्रामसभा घालचो म्हणून 4 पेजीस ज्यो दिल्ल्यो ताका कांय ऑथेंटिटी ना सो आमकां आतां मिटिंगे भितर ताणें ऑफिशियल गॅजेटी कॉपी दिल्या हो पॉयंट हांवें रेज केला की आमकां ऑफिशियली आतां मेळ्ळां पळय सो हाजे पयलीं 4 पेजी दिल्ल्यो सो हांवें तांकां इतलें सांगलें म्हजे आनी 4 आसा ते 7 करपा जाता तातूंत पॉयंट एड करपा जाता मायनस करपा जाता ऑफिशियली आमकां आतां मेळ्ळां गॅजेट हाजेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचें ऑफिशियल गॅजेटीची कॉपी हे पळय आतां मिटिंगे भितर जाली तेन्ना आमकां सेक्रेटरीन दिल्या इतलें हांवें सांगलां आनी दुसरें कितें सांगलां हांवें हें सगळें आमकां दिलां तेच भाशेन VCD कमिटी आसा गांवच्यो आमची ग्रामसभा आहा तांचे मुखार मिटींग घेवन प्लेस करा. After the Visarjan and immersion of several Ganeshas across the state, there was a huge demand for fish in the market. Here are some of the visuals of the crowd seen at Karanzalim Beach and the fish selling joints to buy fish.
Okay, done, sir. Bye. Yeah. Here are the glimpses of Ganesh Visarjan and celebration. प्रतिवार्षिक असं उत्सव या परवरी पोलीस स्टेशनच्या जाग्यावर दरवर्षा 9 वर्षाचा उत्सव असता आणि या वर्षा कोविडच्या काळात आमचे परवरी पोलीस स्टेशनचे इन्चार्ज श्री निनाद देऊळकर यांच्या नेतृत्वाखाली इतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन या कोविड पिरियडाचं SOP बऱ्याच बरं फॉलो करून सोशल डिस्टन्सिंग काही कल्चरल काहीच प्रोग्रामचे जेणेकरून जास्त लोकांचे मेळावं जातलो अशा काहीच गोष्टी एक्झिक्यूट न करता 9 दिवसाचं समस्त या कर्मचारी वर्गांक एकत्रित येऊन पूजा विधी आणि स्तोत्र पठण आरती भजन अशा पद्धतीने हो 9 दिवसाचा उत्सव या समस्त परवरी पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांक एकत्रित येऊन 9 दिवसाचा उत्सव साजरा केलो. तर असं या सोहळ्यान सगळे SOP म्हणजे गव्हर्मेंटान दिल्ले SOP फॉलो करून चांगलो असो जो आमचो हिंदू धर्माचा जो मोठो उत्सव ज्याची आम्ही प्रतिवार्षिक वाट पळयता आमी मोठ्या थाटाने वाट पळयता असो हो उत्सव ह्या वर्षी आमी ह्या परवरी पोलीस स्टेशनच्या जाग्यार 9 दिवसाचो उत्सव आमी गव्हर्मेंटान दिल्ले SOP फॉलो करून आमी उत्सव साजरो केलो आणि आयज आमच्या गणपतीचे विसर्जन सोहळा आहे ती सुद्धा आमी सारखी SOP फॉलो करून मास्क वेअरिंग करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आमी आयज हा विसर्जन सोहळो बेगींतल्या बेगीन जितलो बेगीन जाता अशा टायम कन्झ्युमींग अशा इतल्या कमी टायमान आमी हो विसर्जन सोहळो साजरो करता. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा. Thank you for watching HC, and that's all we have in today's news bulletin. For more, please do follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye.